Dear students, I am Nasim Miss. Today we are going to learn English Standard 10, Unit 3, 3.5, The Alchemy of Nature by Raksha Bharadia. Limitless sky with trillions of galaxies reminds us how insignificant we humans are in this vast universe. Water always flows from high to low. In the same way, knowledge should be transferred from the learned to ignorant. Trees provide shade selflessly to everyone. We should be selfless in our life too. Nature does not hurry, yet everything is accomplished. Trees stand deeply rooted in the ground, even though seasons change. We should face any difficulty in our life with patience. 3.5 The Alchemy of Nature. To see a world in a grain of sand and a heaven in a wild flower, hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. William Black. We instinctively turn to outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing our well being. Nature soothes and nurtures. Nature fulfills and motivates. Nature whispers and commands. Are you listening? When I do, it leaves me in complete awe. We have a hibiscus plant in our garden. Every fortnight a flower blooms on it, big, bright, and tender. Through the day it smiles with the sun and dances with the wind, but as evening approaches, it starts wilting. The morning after, it withers completely, and by evening it falls and becomes one with the earth again. The flower comes to life only for a day, yet it does so in full splendor. What if we too lived our life, however short, to its fullest? कुदरत की कारीगरी, कुदरत का करिश्मा। रेत के एक ज़र्रे में सारी दुनिया देखने के लिए, एक जंगली फूल में सारी जन्नत देखने के लिए, अपनी हथेली में वसी और लामहदूद वक्त और ज़माने को कैद कर लो। विलियम ब्लैक। ख़ुद को एक्टिव और हेल्दी रखने के लिए हम अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ से हटकर कुदरत की खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कुदरत हमें रिलैक्स करती है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, हमारी परवरिश करती है, यह हमसे सरगोशी भी करती है और कमांड भी करती है। क्या आप सुन रहे हैं? जब मैं कुदरत के विस्पर को सुनता हूँ तो दिल से उसे रिस्पेक्ट करता हूँ। हमारे गार्डन में एक जासुंदी का पौधा है। हर 2 हफ्ते में उसमें एक फूल लगता है, बड़ा रोशन और नाजुक। सूरज की रोशनी में दिन भर खिला खिला सा, मगर शाम होते ही मुरझाने लगता है और आखिरकार शाख से टूटकर गिर जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। वो फूल एक दिन की ज़िंदगी लेकर भी बड़ी शान से जीता है। हमें भी उस फूल की तरह अपनी छोटी सी ज़िंदगी को जिंदा दिली से जीना चाहिए। We went to a rocky beach and saw the spread of the majestic ocean and the rocks alongside, carved, sculpted, and shaped by the water. Water is so gentle, rock is so hard, yet as the water flows over it every day for years, the rock gives in. It takes the shape that the water commands. Our problems are so colossal and we are so small, yet if we persist. We saw small bits of grass peeping through the small cracks in the concrete pavement. It left us thinking
However impossible things may look, there is always an opening. We saw a tree bare of all leaves in the cold winter months. We thought its chapter was over, but 3 months passed, spring set in, and the tree was back to its green majesty once again, full of leaves, flowers, birds, and life. What if we too had the conviction that however difficult things are right now, it will not remain so forever? Remember, this too shall pass. हम एक रॉकी बीच पर गए तो देखा कि मुख्तलिफ रंगो रूप की तराशी हुई चट्टानें थीं। सालों से पानी की लहरों की मार खा खा कर सख्त चट्टानों ने अपने शेप बदल दिए थे। इसी तरह बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं अगर हम हिम्मत से काम लें। जब हमने फुटपाथ की दराजों में उगी हुई घास को देखा तो लगा कि नामुमकिन चीज़ों को भी कहीं न कहीं रास्ता मिल ही जाता है। विंटर सीज़न में हमने पेड़ को पत्तों से खाली देखा तो यूँ लगा कि अब इस पेड़ की ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मगर मौसम बहार के आते ही उसमें दोबारा जान पड़ गई। पत्तों, फूलों, परिंदों के साथ उसी तरह शान से खड़ा था। बिल्कुल इसी तरह बुरा वक्त भी ठहरता नहीं, गुज़र जाता है। बस थोड़े पेशेंस की ज़रूरत है। We saw an army of ants lugging a fly which was at least 10 times the ant's size. The ants organized themselves around the fly, lifted it on frail feelers, and carried it to quite a distance. Their teamwork and perseverance were impressive. What if we too are consistent, organized, focused? Spider webs are delicate yet very strong. Our rainbow colors the entire sky. The oysters take in a grain of sand, they open up with a pearl. Innumerable stars shine across the infinite sky. Clouds take new shapes with every passing moment. The wind makes trees dance with unhindered passion. Water, without hint of ego, changes its form according to dictates of the sun and the wind. When we see a caterpillar turn into a butterfly, a flower turn into a fruit, we experience the alchemy of nature. We touch it and become gold ourselves. हमने चींटियों की कतार को उनसे 10 गुना बड़ी मक्खी को खींच कर ले जाते देखा। उनका टीम वर्क और पेशेंस गज़ब का था। हम भी उनकी तरह ऑर्गेनाइज्ड और फोकस हो सकते हैं। स्पाइडर के जाले नरम और मुलायम नज़र आते हैं मगर बड़े मजबूत होते हैं। एक अकेली धनक पूरे आसमान को खुशनुमा बना देती है। सीप में रेत का एक ज़र्रा सच्चा मोती बन जाता है। बेशुमार सितारे आसमान को रोशन कर देते हैं। बादल हर लम्हा अपना शेप बदलते रहते हैं। पेड़ पौधे बेख्तियार हवाओं से झूम उठते हैं। पानी सूरज और हवा के मुताबिक अपनी शक्ल तब्दील कर देता है। कैटरपिलर एक बटरफ्लाई में तब्दील हो जाता है। फूल फल में बदल जाते हैं। हमें कुदरत के करिश्मों का पता चलता है और यूँ लगता है कि हम उसे छूकर खुद भी सोना बन गए हों। अगर आपके जहन में कोई डाउट्स या सवालात हों तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द अज जल्द पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।